Hello friends, welcome to In-Depth News Analysis series. Today we are going to discuss a very important topic. The topic is oil prices. Now why I am discussing this topic? The reason is recently the oil prices have touched negative in American future market, and that has raised a very important question that how the oil prices can go negative. And if they are going negative, then why India is not decreasing the price of oil? And there is one more question which can be there in our mind, is that how the oil prices are decided in the international market. So today's topic of discussion is going to find out the answers of the questions which I had raised. I will start with the news. Oil prices in America has dipped to below zero as the producers are forced to pay to dispose of the excess. Here, the news means there is a stockpiling of the crude oil in America. And because of that stockpiling, because of the storage capacities which are limited in America, the producers have to sell the crude oil at the negative prices. How this happens? See, why the prices of crude oil has gone below zero for the first time in history in America. You can see the prices of the crude oil which has collapsed on 20th April suddenly to minus $40 per barrel. If I talk about the intraday, suddenly it decreased to negative after 12 p.m. This is also one weakness of the future market which are traded in the stock exchange. It can go to a negative point without giving you any time for consideration. This is what happened in America. Now, the complete picture is, see, a barrel of oil is close to 160 liters. And it is really difficult and inconvenient also for the traders to physically trade the commodity. So that is why there is a oil future contract. So पहला क्वेश्चन जो इमर्ज होता है वो ये होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड ऑयल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज क्या है. Now there is a mercantile exchange in New York named as New York Mercantile Exchange, NYMEX, which has opened the oil future trading in 1983. Now a future contract is an agreement to buy or sell a commodity or asset at a future date at a market price. कुछ पॉइंट इसमें आपको रिमेंबर रखने हैं. You need to remember this point also, that a future contract is an agreement where a buyer and seller have some agreement to sell or purchase a commodity at a future date and at a market price. यहाँ पे वर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. See, there is some similarity between the two. यहाँ पे हम जो ऑयल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ऑयल ट्रेडिंग इन अमेरिका इज डन थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ओके, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां पे प्राइसेस नेगेटिव गए थे 20th अप्रैल को. डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज बोथ इन्वॉल्व द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय एंड सेल an asset at a specified price by a certain date. दोनों में ही एग्रीमेंट होता है of buying and selling at a specified price by a certain date, but in forward contract it is private and customizable. That means it can be changed and it is over the counter. ये stock exchange में नहीं बेचा जाता है, ये private एक agreement होता है. While a future contract has a standardized term जो change नहीं हो सकते, and it is traded on the exchange where the prices are settled on a daily basis. That means यहाँ पे हम trading कर सकते हैं.
लेकिन एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। जब उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म होगा तब हमें उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ I hope the point is clear between the difference of forward and the future contract. In forward contract, it is over the counter, that means outside the stock exchange, and it can be changed and it is privately placed. While a future contract is a standardized, that means it cannot be changed and it is traded on exchange publicly. तो यहाँ पे डे टू डे ट्रेडिंग होती है, जैसे शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं वैसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दिस कैन बी वन क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। Now, as I told you that a future contract will come with an expiry date. In case of oil, this date of the future contract can be of 9 years. However, mostly the future contracts are traded on monthly duration. That means what? कि अभी मान लीजिए 20th अप्रैल की अगर हम बात करें, 20th अप्रैल है, so 20th अप्रैल को हम जो डिलीवरी करेंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने 20th मार्च को ही बना लिया होगा। दैट मीन्स ज्यादातर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑयल में वो मंथली ट्रेडेड होते हैं। नाउ द प्राइस प्लंज वाज पार्शली ड्यू टू द वे ऑयल इज ट्रेडेड। प्लंज मीन्स द डिक्रीज। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1000 barrels of crude and 1 barrel is having around 160 liters, as I told you, delivered to the energy companies which have their storage tank. That means what? मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं और मैंने एनर्जी कंपनीज को के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 barrels of crude, जो एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है जिसमें ट्रेडिंग होती है। 1000 barrels of crude का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने फॉर एग्जांपल आज कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे नेक्स्ट मंथ जो है इसकी डिलीवरी करनी है। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू डिलीवर द सेम थिंग इन द नेक्स्ट मंथ, the same delivery will be stored in the energy companies, which is going to further refine or in the same format only is going to export the oil to the importing countries. Now, Cushing is the place in America where the storage tanks are located. Now, what happened was that Cushing की जो capacity है, storage capacity है, वो almost full हो गई। That means what? जिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो क्रूड ऑयल की डिलीवरी होनी थी उस डेट पे कशिंग में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। एंड वी ऑल्सो नो दिस थिंग दैट ड्यू टू कोविड द डिमांड ऑफ ऑयल इज वेरी लो। कंपनीज रन नहीं हो पा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जीरो है, लॉकडाउन है पूरे वर्ल्ड में। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज ऑफ द स्लम्प इन डिमांड, जो एनर्जी कंपनीज हैं वो अपनी कैपेसिटीज को खत्म नहीं कर पा रही हैं। तो दे हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी बिकॉज देयर इज नो डिमांड, एंड दैट इज व्हाई अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्राइस एक मार्केट डिटरमाइंड रेट पे होता है, दैट मीन्स द प्राइस एट द डेट ऑफ डिलीवरी, जो मार्केट प्राइस होता है एट द डेट ऑफ डिलीवरी हमको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। सो व्हेन द एनर्जी कंपनीज have said that we don't have the capacity to purchase, तो प्रोड्यूसर को लगा कि अब वो स्टोर कहां पे करेगा, एंड दैट इज वाई अगर वो ऑयल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम बेच नहीं पा रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? इससे ये प्रॉब्लम होगी कि मेरी सेलिंग तो होगी नहीं लेकिन मेरी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो तो बढ़ेगी। तो इससे बेटर है कि स्टोरेज कॉस्ट का पैसा दें, इससे बेटर ये है कि हम सस्ते में ऑयल को बेच दें। वो इतना हो गया, वो $40 पर बैरल तक पहुंच गया था। सो द इन्वेस्टर होल्डिंग द मे कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट वांट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द ऑयल एंड इनकर स्टोरेज कॉस्ट एंड इन द एंड हैड टू पे द पीपल टू टेक इट ऑफ देयर हैंड्स, एंड दैट इज व्हाई द प्राइसेस हैव डिक्रीज, जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरीके से प्राइसेस इसकी वजह से डिक्रीज कर गया, बिकॉज द मेन रीजन इज कोविड हियर। Now, a negative price suggested that the sellers were ready to pay the buyers to take the deliveries in a bid to avoid incurring storage cost, because ये जो storage cost थी, अगर मैं मान लूँ कि $40 पर बैरल गया है तो storage cost 100% $40 पर बैरल से ज्यादा ही होगी। तो इससे बेटर है कि हम ये पैसा दे करके वहां पे storage cost का पैसा बचा लें। However, as I told you,
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था उसकी वैल्यू नेगेटिव गई। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रूड ऑयल की वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। रीजन इज, जो कॉन्ट्रैक्ट मई में आना था उसका पॉइंट, उसकी वैल्यू नेगेटिव गई है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जून में आना है उसकी अभी भी वैल्यू $20 के आसपास है। बिकॉज हम करंट की बात करेंगे, तो करंट सिचुएशन इज नॉट गुड। सो स्लोली स्लोली में भी ये भी हो सकता है कि जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव जाए। बट अभी जो है, अभी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मंथली बेसिस पे होता है उसमें सिर्फ मई का अफेक्ट हुआ है, जून का अभी भी $20 पर बैरल पे चल रहा है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, which is also important for prelims, is how prices are decided in the international market. Now, there are three types of crude oil production at commercial level. One is Brent, which is a standardized mark. Second one is Dubai crude. And the third one is West Texas Intermediate, जिसको WTI बोलते हैं। WTI करंट न्यूज जो आई है जिसमें क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव गया है वो WTI में गया है, अमेरिका में गया है। इट हैड नॉट हैपेंड इन ब्रेंट और दुबई, ये चीज आपको याद रखनी है। When I talk about Brent, see, as I told you, three different categories of crude oil are there. One which is standardized through Brent, second which is standardized through Dubai, the third which is standardized to West Texas Intermediate और WTI। वर्ल्ड का 2/3 जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो ब्रेंट के थ्रू मैनेज होता है। While when you talk about WTI, it plays an important role in America and Caribbean countries. While when you talk about Dubai, it plays an important role in Asian markets. So जो वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसके बेसिस पे ऑयल प्राइसेस वेरी करते हैं वो तीन तरीके से होता है। वन इज ब्रेंट, अनदर वन इज दुबई क्रूड एंड द थर्ड वन इज वेस्ट टेक्सास। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज फॉर अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज। ब्रेंट इज फॉर 2/3 of the production, which has not only Europe but also a parts of America, but also you have Middle East, you have OPEC countries. So Brent is the major decider factor. ब्रेंट के हिसाब से ही WTI वेरी करता है ज्यादातर समय। ओके, एंड दुबई जो है, जो पर्शियन गल्फ का जो ऑयल है वो दुबई के थ्रू होता है। दुबई स्टैंडर्डाइज मेथड उसमें होता है। नाउ ईच ऑफ दीज ऑयल्स डिफर इन देयर सल्फर कंटेंट एंड हाउ हार्ड इज इट टू रिफाइन देम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ब्रेंट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड and other oil prices are decided relative to it. Majority of the world's trading happens on Brent crude, जो मैंने आपको बताया कि 2/3 जो होती है वो Brent crude के बेसिस पे oil price decided होते हैं। Now, this can be a question of prelims also, that which are the oil fields which we are referring here to Brent crude. Oil fields are in the North Sea. If you see the region of North Sea, this is the region of North Sea, between Norway and UK. Now, here there are few important oil fields. One is Brent, second one is Forties, third one is Osenberg, and fourth one is Ecofisk. ये आपको चार नाम याद रखने हैं because since the prices have gone negative, so certainly जो standardized method है उस पर UPSC question पूछ सकता है। So the Brent crude actually refers to the oil of the North Sea from 4 important oil field locations. The one is Brent, second is Oseberg, third one is Ecofish, and fourth one is Forties. Now, the different types of crude oils are traded in a special type of market which is called as futures exchange. हमने देखा था अभी न्यूयॉर्क में NYMEX है। Yes, here the producers and the purchasers would come with their orders for the delivery at a future date. जो अमेरिका में हो, the end producers and the seller both have a price in mind, and depending upon their urgency, needs will be taken to a particular price. That means actually में demand and supply के basis पे ही assessment होता है। The traders in the future market do a collective guessing
on the total supply and demand for oil in the future. एक guessing होता है और वो एक blind guess नहीं होता है। Guessing जो होगी वो demand and supply की situations पे होगी। कुछ examples मैं आपको दे सकता हूँ जो guessing में help कर सकते हैं। These are intelligent guessings. Like for example, if I talk about geopolitics, अगर मान लीजिए ये न्यूज आती है कि अमेरिकाज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स डबल विद अ मैसिव न्यू पर्मियन डिस्कवरी। रिसेंटली अमेरिका में जो है ऑयल की डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जंप कर गया है अमेरिका में। अगर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जंप करेगा तो सर्टेनली प्रोडक्शन जो है ऑयल का वो बढ़ जाएगा, और अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई साइड में क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सर्टेनली प्राइसेस जो है वो फ्यूचर में डाउन जा सकते हैं। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंडीशन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, like in the case of America, where recently the oil fields were discovered, and it is expected that since the supply will increase, because already you have OPEC, Organization for Petrol Exporting Countries, which are producing oil, so there will be one more producer. Certainly there will be competition among the producers which can decrease the price for the consumer. So यहाँ पे intelligent guessing इस basis पे हो सकती है। Second is change in the consumer habits. Many a times consumer habits also changes over a period of time. Like for example, if I talk about the crude oil से क्या क्या बनता है? Crude oil से सबसे ज्यादा तो गैसोलीन बनता है 44.1%, जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। सो अगर मान लीजिए मेरा एक असेसमेंट ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अपकमिंग टाइम में इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो सर्टेनली गैसोलीन का यूज भी बढ़ेगा, that means demand बढ़ेगी, and certainly the prices will go up. So here by a future contract I can intelligently guess the price. So कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे बोला था intelligent guessing है। Like for example, fuel oil is also produced, kerosene type of jet fuel, residual fuel oil, still gases, coke, asphalt, petrochemicals. There are a lot of things which are produced through a crude oil, and this is the graph which shows the proportion of the various quantities which are produced through the crude oil. So जिस तरीके से consumer habits change होंगे, like for example, if the consumers decide that in future we are not going to use the fossil fuels, like for example काफी सारी universities और colleges में professor साइकिल से चलते हैं, so अगर future society में यह assessment आता है कि हम renewable sources का use ज़्यादा करेंगे और कंज्यूमर का हैबिट्स उस हिसाब से चेंज होता है, तो सर्टेनली जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो सर्टेनली डाउन जाएंगे। दिस इज आल्सो वन फैक्टर व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस इन द फ्यूचर मार्केट। द नेक्स्ट फैक्टर इज टेररिस्ट अटैक। रिसेंटली क्या हुआ था कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं वहां पे हाउदी रिबल्स ने अटैक किया था। नाउ सऊदी अरेबिया प्रोवाइड्स वर्ल्ड्स 12% ऑफ द क्रूड ऑयल। वर्ल्ड का ये 12% क्रूड ऑयल सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे हाफ ऑफ द ऑयल फैसिलिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हाउदी रिबल्स, देन सर्टेनली द सप्लाई विल बी reduced, and when the supply is going to reduce, certainly if the demand remains the same, automatically prices जो है वो ऊपर जाएंगे। So अगर मान लीजिए टेररिस्ट अटैक होता है या कोई डिस्टर्बेंस होता है ऐसी एरिया में जहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो सर्टेनली उसकी वजह से भी ऑयल का प्राइस ऊपर जा सकता है। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यूएस में अभी शेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ गया है विच इज ग्रोइंग एट अ डबल डिजिट ग्रोथ। सो फॉर एग्जांपल अगर शेल गैस है विच इज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो शेल गैस ऑल्सो प्रोवाइड्स यू एनर्जी, एंड अमेरिका इज अ वेरी strong consumer of the fossil fuels. Now what will happen then? If the shale gas production doubles in America, which has been in the news recently for the past few years, so certainly US is going to consume less fossil fuels, which is going to decrease the price of the fossil fuels in the international market. And also US might push the export of the shale gas or shale oil to the other countries which were till date importing crude oil. So it is also going to influence the price of the crude oil. So we have seen that how the geopolitical conditions
or for example the consumer habits or the disturbances or alternate sources of energy. Like recently the Paris Treaty 2015 talked about the renewable energy. Now, renewable energy is going to play an important role in the coming time. So international organizations are forcing the countries to reduce the consumption of the fossil fuels. So this is also going to affect the prices of the crude oil. Or for example, if the IMF cuts India's growth forecast, for example, if it says that from expected 7.5, now it is going to be 7.2. If this thing happens, then certainly what is going to be the consequence here? If the production suffers or GDP suffers, then certainly the consumption of oil will also suffer. So for example, if IMF provides a forecast for the developing countries like China or India that they are not going to perform well in the GDP, then certainly the price of the crude oil may also go down, because India and China are one of the important and the biggest consumers of the crude oil. This is also going to decide the price of the crude oil. Okay. Now what happened recently? Recently, there was an agreement between UPSC countries, Organization of Petroleum Exporting Countries, and Russia for decreasing the production of crude oil. Now this deal between Russia and OPC was brokered by the President of America. The reason is शेल गैस का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा है. So recently when the crude oil prices were decreasing, the producers of shale gas in America were suffering. Now, America already is reeling under the economic crisis. So whenever the shale gas production is going to be affected, and since America is so powerful, so America forced the OPEC countries to broker a deal with Russia so as to reduce the production by 10 million barrels per day. Now, demand has fallen. Currently, if I talk about current situation because of COVID, अभी की जो डिमांड है वो 30 मिलियन बैरल्स पर डे से डाउन गई है बिकॉज ऑफ कोविड. और जो अभी डील हुई है रशिया और ओपीईसी में वो 10 मिलियन बैरल है. दैट मीन्स व्हाट, इवन इफ वी हैव अ डील बिटवीन रशिया एंड ओपीईसी, then also we can't see any significant increase in the crude oil prices in the near future, because the global demand has decreased by 3 million barrels per day, and the decrease or the brokered deal between OPEC countries and Russia has to cut the production by 10 million barrels per day. So certainly the COVID pressure is further going to create the picture difficult for the shale gas producers as well as the crude oil producers internationally. The last part of the story is why India's petrol prices remain flat despite global crude oil crash. See, if you see the diagram of Texas Intermediate, that means the prices of the crude oil in America, it has gone to negative. If I compare the same thing with the prices of crude oil being exported by the OPEC countries, they have not gone negative, but still we can see that how the prices of Brent crude, which is the production of the OPEC countries, it is decreasing continuously from $70 per barrel in January 20. It has decreased to around $20 per barrel in April 20. So Brent crude prices or the international benchmark fell to historic low of around $20 on 20th April, which is a benchmark of the Organization of Petroleum Exporting Countries, which is made up of 15 countries. Now, this is important for UPSC to study about OPEC. This is your homework. You have to study about OPEC.
which countries are part of OPEC. Already we have discussed that Brent crude is the standard benchmark of OPEC countries. Now, when the Brent crude is decreasing from $70 per barrel to around $20 per barrel in April 20 or $16 per barrel by April 22, why the Indian prices are not decreasing? Yes, because it has decreased by 39%, but the petrol prices in India had remained flat at 76 rupees or $1, and the diesel price too were unchanged at 66.21 rupees. Then why the prices are not decreasing? The reason is very common. India's fiscal condition is not very good. You can see the forecast. If we talk about the deficit started decreasing after the Modi government, but because of the COVID crisis and certain other internal shocks like demonetization and GST, the fiscal deficit is going to increase in the near future. And according to the few assessment agencies, it is going to increase to around 7% of the GDP in 2020 because of COVID. And if you talk about the GDP forecast is also not very good because of COVID. It is going to be around 4% in 2020. It may be much lower than that. This is the assessment of ADB, Asian Development Bank outlook. So when the fiscal deficit condition is not very good and also the forecast is not very good, how the government is going to cover up the losses? Government is going to cover up the losses by increasing the excise duty. Now what is excise duty? Excise duty is the tax on production. Since we import the crude oil and the refineries produce the refined oil, so the production of the refined oil at the refineries attracts excise duty. So the decrease in the crude oil prices internationally has been proportionally increased due to the increase in the excise duty. तो जो बेनिफिट कंज्यूमर्स को होने वाला था वो बेनिफिट गवर्नमेंट को हो गया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके. And the recent depreciation of the rupee. Recently what is happening? The rupee has depreciated and some analysts say that the Indian rupee is going to touch the level of 80 in the near future, per 80 rupees per dollar. So if the rupee is going to depreciate, अगर rupee की वैल्यू कम होती है तो certainly जो हमारा import है वो महंगा हो जाएगा. This is also one danger in front of India. So when the Indian currency is depreciating, when the fiscal deficit crisis is there, when the GDP forecast is not very good, so what is the best available method with India? As we can see, this is the depreciation, how the depreciation is increasing to the level of 80. This is exchange rate between dollars and rupees. So when the three conditions, that means the exchange rate is declining or depreciating, or when you talk about the GDP forecast, or when you talk about the fiscal deficit condition, if they are going bad, certainly the government is left with the tool of excise duty, and that is why proportionally excise duty has been increased in order to reduce the losses because of decreased GDP forecast or depreciation or increasing fiscal deficit, because certainly government will have to inject money in the economy in order to support the economy which is reeling under the COVID. So that is why the prices have not changed. By increasing the excise duty, the government had reduced its own losses. When you talk about the consumers, why the consumers are not resenting? Because the prices have been constant. हमको कोई चीज तब तक अफेक्ट नहीं करती जब तक कोई बहुत कम या बहुत ज्यादा हो. हमको अगर सेम प्राइसेस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर्स का रिएक्शन जो है वो कम होगा. एंड दैट इज व्हाई द कंज्यूमर्स आर आल्सो नॉट वेरी मच रिएक्शनरी. Okay, so that's all about the point of discussion. Now, one student have asked one question that, sir, if the oil prices are decreasing, crude oil prices are going negative, can't we go rush to the petrol pump and get paid for it? See, this is not going to happen. पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस से
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, बट दोनों सेम नहीं हो सकते. व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग? बिकॉज we do not pay for the crude. We are going to pay for the refined petroleum product. Like for example, there is a cost of transportation, there is a cost of storage, refining, and then again transportation to the gas station. That must be factored into the equation. And that is why crude oil prices का हो सकता है direct impact हमारे oil price पे ना पड़े. And there is one more thing that WTI has gone negative, which is the Texas Intermediate. The trading in America has gone negative. Our crude oil prices are decided with the help of Brent crude or Dubai, which is the production of oil in Persian Gulf. So these are the Dubai and Brent crude decide the price of crude in our country, which is again equivalent to $20 per barrel. So अमेरिका में डिक्रीज हुआ है. हमारा जो स्टैंडर्डाइज ऑयल इंडेक्स है, जिसको हम जिसका स्टैंडर्ड हम ब्रेंट क्रूड से लेते हैं या फिर हम दुबई से लेते हैं, उसका प्राइस डिक्रीज नहीं किया है. और अगर डिक्रीज भी करता, फिर भी देयर आर सर्टेन कॉस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिफाइनिंग एंड देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन टू द गैस स्टेशन, which may not result in the same decrease in prices as the crude oil prices decrease. Now, the important questions, that's all for the debate currently. Important questions which can be asked in UPSC, which is very important. आपको इसका आंसर जरूर से लिखना है. You don't have to forget this thing. See, the government expect to mop up 60,000 crore rupees from the sale of BPCL. Of its total target of 2.1 lakh crore rupees. Critically discuss the achievability of this target in the situation of decreasing oil prices. Government ने recently disinvestment का target BPCL को लगाया. BPCL is an oil marketing company. Oil marketing company is going to face the losses because the crude oil prices are decreasing. So when the oil marketing companies, crude oil prices are decreasing because there is no demand. So even if you get the crude oil at lower price, then also where are you going to sell those products? So BPCL is going to face the problem. So in this situation, how government is going to satisfy the target of 60,000 crore rupees sale of the shares of the BPCL? This is one question for you. Another question is, recently the oil prices have been decreasing at a steady rate as we have seen. क्रिटिकली एनालाइज द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. अगर ऑयल के प्राइसेस ही इतने डाउन जाएंगे तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट क्यों करेगा? इसका भी आपको आंसर लिखना है. डोंट हैव टू फॉरगेट दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैन बी, नेचर ऑन वन हैंड गेट्स रिस्पाइट फ्रॉम द इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. लाइक फॉर एग्जांपल, पोस्ट कोविड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटर हो रही हैं. while on the other decreasing crude oil prices will halt the process of renewable energy. लेकिन जो वर्ल्ड का फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो सर्टेनली डिक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइस से अफेक्ट हो जाएगा. सो ऑन वन हैंड वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द इंप्रूविंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, while on the another the decreasing crude oil prices will halt the progress of renewable energy. हमारा टारगेट भी है 175 गीगावाट का टारगेट जो हमने सेटअप किया है 2022 तक, तो हम कैसे पूरा करेंगे उसको? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको लिखना है. सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन. आई होप यू माइट हैव लर्न समथिंग. विल मीट अगेन if I find out some new topic of discussion. Till then, goodbye, take care, and please do write the answers. Thank you so much.